So methods of charging. Okay, one is friction. So one method of charging is by friction. That is what we have been discussing, that is by rubbing. When we rub, we do some work, we supply energy, and the electrons from one atom, one substance gets detached and gets attached to the other substance. So that is one method. So that we have already discussed. Now another method of charging is induction. Okay. And another method is conduction. So we'll now discuss induction and conduction. First, induction. So induction comes from word induce. Induce means we use it for when we make some effect, when some body is affected without physical touch. तो जब हम किसी चीज पे प्रभाव डालते हैं बिना फिजिकल टच के, बिना कोई वर्क किए, और तो हम उसको बोलते हैं इंड्यूस करना. और इस इंड्यूस वाले मेथड से जो कंडक्शन ये बॉडीज को हम चार्ज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन. तो एग्जांपल आई विल गिव यू इज, फॉर एग्जांपल यू हैव अ यंगर ब्रदर और सिस्टर and you want your younger brother to do something for you. For example, pick up your notebook and give it to you. So what you do is you show him a chocolate. Okay, you tell him that if you bring that notebook to me, I'll give you this chocolate. So that brother or sister will bring that notebook to you. So now the brother or sister has been induced to do this work. You have not held his hand to make him do this work. आपने उसका हाथ पकड़ के काम नहीं करवाया, आपने एक चॉकलेट दिखाया, उसके प्रभाव में आके उस बच्चे ने काम करके आपको दे दिया. So that is called, you can say that you have induced your brother to do that work for you. Okay, and this method is called induction. So here also, if we have, suppose, a body which is already charged. So I have mounted a body on a stand, insulating stand, and it has a net negative charge. हमने इसको पहले से ये charge है. Okay, और एक और body है, हम इसको for convenience we take conductors, conducting spheres. So these are conducting spheres. Okay, so one is charged, one is not charged. That means it has as much positive charge as negative charge. तो दोनों charges बराबर हैं, और ये charges जो हैं कैसे होते हैं, फैले होते हैं पूरी body में, evenly spread. Now when you bring this body close to this body, so bring body 1 close to body 2, we don't touch, just bring it close to it. So what will happen? Because it is negatively charged, the charge in this body which is uncharged gets separated. So how it gets separated? Because positive charge is attracted towards negative charge, so all the positive charge will come here and the negative charge will go to the other side. तो पॉजिटिव चार्ज सेपरेट होकर इधर आ जाएगा इसके नजदीक, क्योंकि ये दोनों में अट्रैक्शन है, और नेगेटिव चार्ज दूर हो जाएगा. Okay, so what happens? Positive charge gets close to this body and negative charge away from the body. Now if we remove this some negative charge from the body, then we'll have extra positive charge on the body. So how to remove this?
we attach a conducting wire and put it to earth. तो उसको ग्राउंड में डाल देते हैं, एक कंडक्टिंग वायर को स्फीयर के ये वाले एंड पे लगा के और इसको ग्राउंड में डाल देते हैं। तो ग्राउंड में डालने से क्या होता है, ग्राउंड जो हमारा अर्थ है दैट इज ए स्टोर ऑफ चार्जेस, बहुत बड़ा बॉडी है तो चार्जेस की कोई कमी नहीं है। तो क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं इनको, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सब के सब निकल के अर्थ में चले जाएंगे। ठीक है, ये अर्थ में चले जाएंगे तो यहाँ से ये नेगेटिव चार्जेस खत्म हो जाएंगे, ओके, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। अब अगर हम इस कनेक्शन को तोड़ दें तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ पहले से अट्रैक्टेड है, और अब अगर हम इस बॉडी को यहाँ से हटा दें, तो बॉडी को हमने हटा दिया तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज जो हैं इस बॉडी पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब हमारी ये वाली बॉडी जो है वो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। So with the help of this negatively charged body, we are able to make a body which is positively charged. Okay. So Coulomb's law. Okay, according to this law, the force of attraction or repulsion is directly proportional to the product of the two charges. Suppose we have these two charges, Q1 and Q2, and the separation between the two charges is R. So because of these charges are close to each other, there will be a force of attraction or repulsion. So that may be depending on the polarity of the charges. If Q1 is negative and this also is negative, then there will be repulsion. If both are positive, there will be repulsion. If any one of these is positive and the other is negative, the force will be attraction. But what will be the magnitude of force? So we have to find out the magnitude of force. And the magnitude of force according to Coulomb's law is directly proportional to the product of the two charges. And it is inversely proportional to the square of the distance between the two charges. That means these are the two factors on which force acting between the two charges depends. So these charges are point charges. We're talking about point charges, not charged bodies. So these are not bodies of definite shape, but point charges, very small pointed charges. So the force of attraction or repulsion between point charges is directly proportional to the product of the charges. जितना इन दोनों पे चार्ज है दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, and inversely proportional to the square of the distance between these two charges. So when you combine these two, you get F is proportional to Q1 Q2 divided by R square, and it becomes equal to K Q1 Q2 upon R square. Okay, so that is the expression for force between two point charges. Your K is called the constant of proportionality. Okay, so K is constant of proportionality. Okay, so this is called electrostatic force constant. Okay, so it is also called electrical constant or Coulomb's constant or electrostatic force constant, and its value, the value of K, is 1 upon 4 pi epsilon naught. So this is epsilon, a symbol, and 0 and naught, epsilon naught. So we call it epsilon. So K.
and the value of K is this in SI unit. So if we take all the quantities in SI unit, then the value of K is 1 upon 4 pi epsilon naught. Now this epsilon naught is called absolute electrical permittivity of free space or vacuum. Okay, so that is what it is called, and the value of K is equal to 1. So K equal to 1 in CGS unit. If we take the unit of all these quantities in CGS, that is centimeter gram second, then the value of K is 1. Otherwise, the value of K is 1 upon 4 pi epsilon naught. Now, what does this mean? Absolute electrical permittivity of free space or vacuum. We know if the two charges are placed in vacuum, the two charges are placed in vacuum, and if we place the two charges similarly in water or in oil or in any other medium, then what happens? Because of the presence of the medium, this force changes. So force also depends on the medium in which these two charges are placed. Okay, so medium is important, and epsilon naught is called the, it gives us the how much this medium, which is vacuum, transfer allows the effects to transfer, electrical effects to transfer through it. So if this medium is able to, or is allowing maximum or minimum, or to what degree this medium allows the electrical effects to transfer from one point to another, is given by absolute electrical permittivity. So if this medium is vacuum or free space, we call it epsilon naught. If the medium is some other medium, water or air or some gas, then we call it epsilon m. That is absolute permittivity of medium, and instead of free space we'll write down of medium. So different mediums allow effects to transfer from one point to another to different degrees. कोई मीडियम तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स को ट्रांसफर होने देता है, कोई कम को होने देता है. जैसे आपने ग्राउंड पे चल रहे हैं और एयर में चल रहे हैं, तो आप तेजी से जा रहे हैं. अगर आपको उस ग्राउंड में पानी भर के दे दिया जाए, तो आपकी रफ्तार जो है, आपकी जो चाल है, वो धीमी हो जाएगी. तो उस मीडियम ने आपकी चाल को चेंज कर दिया. इसी तरह इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स भी सभी मीडियम में एक जैसे ट्रांसफर नहीं होते. कुछ मीडियम में वो बहुत ज्यादा ट्रांसफर होते हैं और कुछ मीडियम में वो कम ट्रांसफर होते हैं. तो कौन सा मीडियम कितना ट्रांसफर करवाएगा, वो हम किससे जानते हैं? उस मीडियम की एप्सिलॉन, उसकी जो वैल्यू है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, उससे जान पाते हैं. ठीक है, तो ये इसलिए इसमें ऐड किया गया है. तो हमारा नेट एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा फोर्स का? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. हमने अभी क्या माना है कि मीडियम हमारा फ्री स्पेस है, बीच में कोई और मीडियम नहीं है, सिर्फ वैक्यूम है. तो फ्री स्पेस इज इक्विवेलेंट टू वैक्यूम into Q1 Q2 divided by R square. So that is the final expression for force by Coulomb's law. Of electrostatics. The value of epsilon naught, so generally if the medium is air, medium between the charges is air, then we call it, say, epsilon V or vacuum,
or rather we can use it as epsilon air से नॉट, और एयर के लिए ए भी यूज कर सकते हैं। तो मीडियम अगर एयर है तो its value is 1.00059. If the epsilon, it is vacuum, if the charges are lying in vacuum, then its value is 1. If it is water, then its value is 80. Okay, so this is how this value changes. That means in vacuum you put it equal to 1, which generally is represented by epsilon naught. एप्सिलॉन वैक्यूम में इसका वैल्यू को हम एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, उसकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। अगर हम इसको एयर में रखेंगे दोनों चार्जेस को, तो वहाँ क्या प्लेस करेंगे, 1.00059 से लेके 1.0006 तक इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी एंड अदर फैक्टर्स। तो तब हम यहाँ इसकी वैल्यू ये प्लेस कर देंगे। और अगर हमने इसको पानी में रख दिया दोनों चार्जेस को, तो हम यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह 80 की वैल्यू प्लेस कर देंगे, एप्सिलॉन वाटर हो जाएगा, वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट हट जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग मीडियम में हमें फोर्स की वैल्यू अलग अलग नजर आएगी। तो फोर्स किस किस पर डिपेंड करता है, दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड कितना है उस पर डिपेंड करता है, दोनों में सेपरेशन कितना है उस पर डिपेंड करता है, और मीडियम क्या है उस पर डिपेंड करता है। और inversely proportional to the distance between the square of the distance between the charges. अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, और डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ जाएगा। So that these are the factors on which this force depends on between the 2 point charges.